Good morning, students. I am Simukta from JPPS. Student, today we start Chapter 8 Introduction of Trigonometry. Student, today we start Chapter 8 Introduction of Trigonometry. Student, firstly we discuss some fact. Suppose this is a suppose ABC is a right angle triangle. Student, ABC is a right angle triangle in which एंगल बी इज 90 डिग्री. स्टूडेंट एंगल बी क्या आपके पास 90 डिग्री है. स्टूडेंट फोर एंगल सी आपके पास फॉर्म हो रहा है. फोर एंगल सी बी सी इज बेस. फोर एंगल सी बी सी इज बेस. सेम स्टूडेंट बी सी क्या आपके पास बेस है. फोर दिस इज हाइपोटेनियस. ये क्या है हाइपोटेनियस है. दिस इज हाइपोटेनियस. एंगल 90 है ना. 90 की जो अपोजिट होगी वो क्या होगी आपके पास हाइपोटेनियस. इट मीन्स ए सी इज हाइपोटेनियस, बी सी इज बेस एंड इज ए बी इज परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर. स्टूडेंट फोर एंगल सी बी सी इज बेस, AC is hypotenuse and AB is perpendicular. Student, we know that Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. स्टूडेंट आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है. एंगल भी क्या है 90 है. एंगल बी की जो अपोजिट साइड है ए सी, ये क्या आपके पास हाइपोटेनस है. फोर एंगल सी बी सी इज बेस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर. स्टूडेंट वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इट इज पाइथागोरस थ्योरम. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट some trigonometric ratio. First is नाउ स्टूडेंट सेम आपके पास एंगल ए है ना. फोर एंगल ए बी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस. स्टूडेंट एंगल ए के लिए ए बी क्या है आपके पास बेस है, बी सी क्या है परपेंडिकुलर है एंड ए सी क्या है हाइपोटेनियस है. इट मीन्स आपके पास अकॉर्डिंग टू एंगल बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे. स्टूडेंट बेस एंड परपेंडिकुलर आर इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू एंगल. सॉरी. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. फर्स्ट रेशो इज साइन थीटा. स्टूडेंट सपोज दिस एंगल इज थीटा. स्टूडेंट आपने क्या सपोज किया एंगल क्या आपके पास थीटा है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट साइन थीटा. First trigonometric ratio is sin theta. Simply we note is sin theta. First is sin theta. Simple note is sin theta. What is sin theta? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse. So student, साइन थीटा इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेशो है उसको आपने कैसे डिफाइन किया है साइन थीटा. सिंपली साइन थीटा. स्टूडेंट इन दिस फिगर फोर एंगल सी या फोर एंगल थीटा, ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेनस. सो अकॉर्डिंग टू फिगर साइन थीटा इज रेशो ऑफ ए बी and AC. So student in this figure sin theta is AB upon AC. Now second is cosine theta. Simply we note cos theta. Student second ratio आपके पास क्या है cosine theta. Cosine theta we can not simple cos theta. What is cos theta? Ratio of base and hypotenuse. So student
ratio of base O and hypotenuse is defined as cos theta. Or simply, in this figure, 4 angle theta, BC is base and AC is hypotenuse. So student, cos, what is cos? Cos is ratio of base and hypotenuse. What is cos? Cos is ratio of base and hypotenuse. So student, cos theta is BC upon AC. Now student, next is tangent theta. Tangent theta, simply we can note tan theta. Simply we can note tan theta. Tan theta, tan tangent theta is ratio of perpendicular and base. स्टूडेंट आपके पास perpendicular and base का ratio of perpendicular and base is defined as tangent theta. So tangent theta is perpendicular upon base. So tan theta, in this figure perpendicular is AB, base is BC. So tan theta is AB upon BC. Same student, we define secant theta, cosecant theta, cosecant theta. What is cosecant theta? Ratio of hypotenuse and base. Ratio of hypotenuse and base defined as cosecant theta. Hypotenuse and base is defined as, students see here, simply we can write sec theta, sorry, we can write cosec theta. So cosec theta, in this figure hypotenuse is AC and base is BC. So ratio of AC and BC is defined as cosec theta. Cosec theta is ratio of hypotenuse and base. Same student. Next is secant theta. Secant theta. What is secant theta? Now student, by mistake cosec theta, it is simple secant theta. It is secant theta. It is denoted by sec theta. It is denoted by sec theta. So sec theta is AC upon BC. So student, it is secant theta. Simply sec theta. Simply sec theta. So sec theta is AC upon BC. It means ratio of hypotenuse and base. Now student, next is cosecant theta. Cosecant theta, simply we can write cosec theta. Student, आपके पास next क्या है? Cosecant theta. Cosecant theta can write simply cosec theta. What is cosec theta? Cosec theta is ratio of hypotenuse and perpendicular. Ratio of hypotenuse and perpendicular is defined as cosec theta. So cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So student, cosec theta, hypotenuse is AC upon AB. Now student, next is and last is cotangent theta. Simply cot theta. Cot theta is ratio of base and perpendicular. Ratio of base and perpendicular defined as cot theta. So base and perpendicular. In this figure, base is BC and perpendicular is AB. So cot theta is BC upon AB. Now student, we discuss 6 trigonometric ratio, 6 T ratio. First is sin theta. Sin theta, simply note sin theta, and we call sin theta.
First is sine theta. What is sine theta? Sine theta is ratio of base, ratio of perpendicular and hypotenuse. It means P upon H. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रेशो को आपने डिफाइन किया हुआ है साइन थीटा. सेकंड इज को साइन थीटा, सिंपली कॉस थीटा. व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज रेशो ऑफ, कॉस थीटा इज रेशो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस. इट मीन्स बी अपॉन एच. थर्ड इज tan theta, simply tangent theta. Tan theta is ratio of perpendicular and base. What is tan theta? Tan theta is ratio of perpendicular and base. It means P upon B. Now student, fourth is sec theta, a second theta. Sec theta is defined as ratio of hypotenuse and base. स्टूडेंट आपने हाइपोटेनियस एंड बेस के रेशो को डिफाइन किया हुआ है cos secant theta, so h upon b. Fifth is cosec theta. Cosec theta, student, cosec theta is defined as ratio of hypotenuse and perpendicular. It means p upon h upon p. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. Next is cotangent theta, simply cot theta. Cot theta is ratio of base and perpendicular. Base and perpendicular, it means b upon h. So student, sin theta is ratio of perpendicular and hypotenuse. Ratio of sin theta is p upon h. Cos theta is b upon h. Tan theta is p upon b. Sec theta is h upon b. Cosec theta is h upon p, and cot theta is b upon h. Now students, we simply classify this P, B, P upon H, H, B. P, B, P, H, H, B. It means पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. Student, we can say पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. P upon H. P upon H, it is defined as sin theta. B upon H, it means base upon hypotenuse cos theta. P upon B, perpendicular upon base, it is tan theta. Sin theta, cos theta, tan theta. Reverse this, H upon P, it means hypotenuse upon perpendicular, it is sec theta, cosec theta. H upon B, hypotenuse upon base, it is sec theta. B upon P, hypotenuse upon perpendicular, it is cot theta.